हेलो गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हो आप लोग? आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। स्पेयर अ सेकेंड एंड आप मेरी चैनल को नीचे जो रेड बटन है उसे आप हिट करके ग्रे कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ। जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होती जाए और हमारी चैनल फ्लरिश करती रहे। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। और अब हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक। इट्स अ पार्ट ऑफ द सीरीज दैट आई हैव सेल्फ डिजाइंड फॉर ऑल द बिगिनर्स। और एक सीरीज स्टार्ट की थी। होप आप लोगों ने मेरी वो सीरीज की पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 देखी होगी। अगर नहीं देखी है, जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हो, वो सारी वीडियोस अवेलेबल। मैं उसकी पार्ट 5 लेके आई हूँ। इट्स ऑल अबाउट हाईलाइटर। कवर दिस टॉपिक और मैं ट्राई करूंगी सारी चीजें आंसर करना। व्हाट इज हाईलाइटर, हाउ शुड वी यूज इट एंड शुड वी यूज इट। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है एंड टाइप्स ऑफ हाइलाइटर, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग बैक। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। समझने की कोशिश करते हैं कि हाइलाइटर्स होती क्या है और ये हमारी मेकअप किटी में फॉर अ बिगिनर और फॉर एनी मेकअप जंकी, व्हाई शुड वी बाय एंड इन्वेस्ट इन एनी हाइलाइटर। हाइलाइटर एक ऐसी मेकअप प्रोडक्ट होती है जिसमें कि शिमरी पार्टिकल्स अवेलेबल होती है इन ए वेरी फाइन फॉर्म, इन ए वेरी सटल फॉर्म, जिससे कि हमारे फेस को हाईलाइटेड या फिर ग्लोई इफेक्ट में। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइलाइटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जिसकी बेस पाउडर फॉर्म में होती है। that is called powder highlighter and very commonly available highlighters in the market these days. highlighter powder form में सबसे ज्यादा easy होती है। the second part that are liquid highlighters. liquid highlighters जो होते हैं वो एक ग्लास बॉटल की फॉर्म में आते हैं और जिसकी बेस लिक्विड होती है। हमने पाउडर हाइलाइटर फर्स्ट बात कर ली एंड हियर कम्स द सेम शिमरी पार्टिकल विल बी यूज्ड इन अ लिक्विड फॉर्म। नाउ कम्स द थर्ड टाइप, जो कि होती है हमारी इल्यूमिनेटिंग बेस, विच इज सॉर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग क्रीम या स्ट्रोबिंग क्रीम बोल सकते हो, या इल्यूमिनेटिंग क्रीम या फिर स्ट्रोबिंग मेकअप बेस। बहुत सारे अलग अलग नाम से उसे एडवर्टाइज किया जाता है। आई हैव इट इन माई किटी and all these highlighters have impressed me a lot and I love each one of these। इसलिए मैंने इसे आज की वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको थोड़ी वेराइटीज दिखा सकूं एंड आपको भी आसानी हो। डू यू रियली नीड टू अप्लाई हाइलाइटर? Yes, if you are comfortable applying and enhancing your features, तो आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हो। Now, how should we use it? The tools that you might consider whenever you are applying any highlighter, वो powder highlighter पे applicable होंगे because powder highlighters are the commonly used highlighters। My blush brush, but I use it to apply highlighter as well because I love applying highlighter here। हाईएस्ट पॉइंट जो होती है, जो हमारी फेस की पैरामीटर होती है, इज योर हाईएस्ट पॉइंट, राइट? सो या यू नीड टू अप्लाई इट राइट हियर Cupid bow. Days I don't do contouring, so I use this brush as my highlighter brush. का कोई रूल नहीं होता, so you can play around with makeup and the tools. And these two are actually the highlighter brush. ये थोड़ी सी dense होती है in your powder highlighter and use it like all over this places and wherever you want to create the magic। तो आप इस टाइप की ब्रश यूज कर सकते हो। And whenever you are applying a liquid highlighter, I would advise to use your fingers and you can use any sponge। We talk about the illuminating cream and the third type of highlighter, that obviously you have to use it as just as your normal cream। First one that I have in the category of powder highlighters, these two are from the affordable range and these two are such a great option to go for any beginner। Sivana colors, Sivana, ये आपको online Amazon पे कहीं भी मिल जाएगी। So Oddbow highlighter, this is a very famous and most talked about highlighter। Closer look product which has like these two are the highlighters, these two have shimmer particles and this is like little matte sort of thing। So once you swirl the brush on the entire pan, so you get such a nice highlighter to apply it on your face। so ये बिल्कुल highlighter का काम करती है। a brush inside this brush, ये इसमें already मिलती है
and you need to just swirl the brush on this pan and apply it. So it's right here. इसकी swatch ऐसी होती है बिल्कुल. Cost you around 350 to 400, and it's going to last for, if you apply it daily also, it's going to last you for 1 to 2 years. So it's a very good option to go for. Odbo highlighter in the shade 05, and here the Sivana color is 01. Moving on, हमने daily use का देख लिया, like day time के लिए. Now moving to the night look और जो party look होती है occasional wear के लिए, I have 3 options for you. उसमें से सबसे first आती है Maybelline की Master Chrome, the famous highlighter. It's Master Chrome shade Rose Gold. It looks somewhat like this. It's right here. It's right here. So this is how it's going to look. ये वो पार्टी वाली नाइट टाइम की लुक के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, एंड इट हैज़ रोज गोल्ड रिफ्लेक्ट. सो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ बूम काइंड ऑफ हाइलाइटर. ऑब्वियसली यू कैन यूज इट फॉर नाइट लुक. ये डेली वेयर के लिए या ऑफिस वेयर के लिए या कॉलेज वेयर के लिए नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट वन मोर रोज गोल्ड हाइलाइटर दैट आई हैव फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, द जाइंट वन. सो देयर Sunkiss Peach Kiss highlighter. Beautiful packaging. And this will cost you around 800 to 900. Huge mirror. This is the mirror, and this is how it's going to look like. This is a very subtle highlighter than the Maybelline one. So this is how it looks. Yeah, this is how it's going to look. Flex dekh pa rahe ho, right? So this is the rose gold reflex. For you, this is from the Makeup Revolution Pro Illuminator in the shade Luminizer. I guess it's a dupe of very famous Mary Luminizer. It has a golden reflex. This is how it's going to look, and it's again a very subtle highlighter. And let me swatch it here. It is swatched right here, which has a rose gold reflex, or ye wali right here above the peach one, and it has a golden reflex. And your skin tone, you can choose any of these two, and these two performs exactly same. I have these 3 pieces from PAC. The PAC Baked Highlighter, 3 shades. These 3 are very famous and very nice shades to go for. First one is 02, second one is 04, and it is 09. तो ये तीनों ही बहुत अच्छी shades है. This one I would suggest for all you future makeup artists right there. You can actually invest in PAC Baked Highlighters. And yeah, this is the shade number 02, which has a golden reflex highlighter. Shade number 02, it's right here. This has a bronze reflex. So it's very good option for dark skin tone beauties. It is right here. This has a bronze reflex. So if you want that bronze goddess sort of look, जो beachy look होती है, जिसमें कि आपको थोड़ी अपने आप को bronzy tan दिखानी होती है, so you can give this shade number 04 a try from the brand PAC. Let's check this shade number 09, and this is like peachy side again. So yeah, peach highlighters are so good, and yeah. This is for fair to medium, this is medium to dark, and this is for the dark skin beauties. So these 3 options you have. Now you can choose and pick any of these. Palette की form में आती है that will have blush ons. तो आप इस टाइप की पैलेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. This is from Maybelline Master Studio 1 and highlighter kit, and it has 4 options. 3 are blush ons, peach, pink, and plum, and this is their highlighter. This is such a good champagne color highlighter. Let me put it right here. ये daily wear के लिए काफ़ी अच्छी है, and all these 3 blushes are also very good. Magical Mastro, and this is, everybody knows the name. It's from MAC Soft and Gentle Highlighter. It is again a baked highlighter, and let me swatch it. Look at this beauty. That's why it is called Mastro. It's a genius one. So yeah, this is MAC Soft and Gentle. Moving on with some liquid highlighters that I own is from
Nykaa. This is their Nykaa Strobe and Glow highlighter, as the name says. This one is in the shade Glazed Bronze. Show you the consistency. It will be somewhat like this, very thick consistency, जिससे कि आपने mix करना होता है. Look at the glow. Highlighters are basically more concentrated form, जो कि बिल्कुल ही आपको वो goddess वाली feeling देने के लिए होती है. So if you want such sort of look, or if you are interested in going for some party look, then you can invest in this bottle, this particular bottle. It is such a beautiful highlight to go for. Affordable range, and this is Born to Glow Illuminating Makeup Base in the shade 02 Gleam. It is again a bronze highlighter, similar like Nykaa one. So let me show that to you. So this is how it's going to look, and obviously as soon as you pour it, you need to blend it nicely to give you such beautiful glow to your. This is from Miss Claire Born to Glow Illuminating Base. One is MAC Strobe Light Cream, very famous one, Strobe Light Cream in the shade Pink Light. I have it in the mini version because I wanted to give it a try rather than investing in the big tube and spend more than 3,000. I would suggest you to obviously invest in MAC Mini. 4 options in strobing cream. So these are the cream base. You can use it as your BB cream, as your CC cream. ये आपने बिल्कुल अपनी हाथ पे लेना है. And this, you just need to squeeze a tiny bit and apply it just like your normal moisturizing cream, and start applying the first layer of foundation or concealer, or you are going to glow, because it has such a beautiful sheen. Just for all the college goers and all the teenage people to invest in such cream rather than investing directly powder highlighters, because this is going to serve the purpose. You don't need to buy any powder highlighters. This is what I had to share today, and hope आपको अब highlighter choose करने में दिक्कत नहीं आएगी. Very soon on this platform, NPS Utopia. Here guys, stay healthy, keep glowing every single day. Catch you very soon. Don't forget to subscribe and share this video.